तो दोस्तों आज हो गया 5 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पिछले हफ्ते भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो भारत विरोधी नहीं है। इमरान खान ने कहा है कि न मैं भारत विरोधी हूँ, न अमेरिका विरोधी हूँ, न मैं किसी और देश के खिलाफ हूँ। मैं हर देश से आपसी सम्मान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता हूँ। आपको बता दें कि अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे इमरान खान इससे पहले मुखर तौर पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जरूर इमरान खान का भारत सरकार के प्रति प्रेम उमड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट पर रविवार देर शाम सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद सोमवार की शाम को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने घटना स्थल का मुआयना भी किया। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हुई बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर न सिर्फ पूर्वी यूपी बल्कि देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ किसी भी दशा में सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। झारखंड में भी गठबंधन सरकार के बीच दरार की खबरें सामने आ रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत अपने कई नेताओं को 5 अप्रैल को दिल्ली तलब किया है। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जारी तनाव को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। खबर है कि कांग्रेस नेता जेएमएम के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार झारखंड कांग्रेस के नेताओं को 5 अप्रैल को दिल्ली बुलाया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में पार्टी कोटा के 4 मंत्रियों, सभी पूर्व अध्यक्षों और कुछ विंग के अध्यक्षों का नाम शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में अपने बोलने के अंदाज को लेकर कहा है कि मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि मेरी ऊंची आवाज़ के गुस्से के कारण नहीं बल्कि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे के अलावा वो किसी और बात पर गुस्से में नहीं आते हैं। लोकसभा में ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अमित शाह लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेश कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद आपराधिक मामलों की जांच आसान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि भारत की आर्थिक स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब है। उन्होंने इस परेशानी पर चर्चा करने के लिए केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे पर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया की सरकार अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने राज्य में मौजूदा हाल को जंगल राज बताया है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने हाथापाई का एक वीडियो शेयर कर आप कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने लुधियाना में कहा है कि मैंने पंजाब में ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी है। कोई भी कानून और व्यवस्था से नहीं डर रहा है, ये जंगल राज है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। Mr. Speaker, my objection to this bill is not that we cannot collect this data. It is not that we should not use technology to prevent crime. My objection is that the government is bringing in this law without respecting constitutional right to privacy or the right against self-incrimination under Article 20. It wants to create databases of citizens but does not want to provide any safeguards. For example, Mr. Speaker, NCRB is being empowered to maintain a database of measurements collected under this bill. What is NCRB? The National Crime Records Bureau. It was created by a notification. It is not even a statutory body. How can a legislation empower a board that has no statutory existence itself? Secondly, under Section 4, no parameters have been provided on who has the power to access this data, what police officer, of what rank. Mr. Speaker, I have certain questions for which I would like the Honorable Home Minister to answer. Under what circumstances can a cop be allowed or denied access to this database? What are the permissible uses of this database? What punishment happens if a police officer uses this database in violation of extant law? Will defendants, it's very important, will defendants in criminal trials be also allowed to use the database to prove their innocence?
What will be the procedure to do so? Improper recording or handling of the data in database is a serious concern. What are the safeguards against malicious misuse or distortion of this data? Mr. Speaker, sir, my again question is, what safeguards exist? One cannot be forced to provide a DNA sample or other information simply because they have been arrested or detained. This is because it is violation of their right against unreasonable searches. After Puttaswamy judgment, the police have to follow this standard. In short, collection of DNA or other measurements is only permissible if it is justified, and it cannot be a general practice. Similarly, when searching a database of fingerprints, DNA or other measurements, the police officer will have to show a probable cause for this search. It cannot be based on the mood of the cop or just a gut feeling. He has to demonstrate why he specifically searched the database. Was there any evidence? Have all other leads been extinguished? What is the basis of his suspension? This bill, Mr. Speaker, fails because it does not provide any of these rules. Is NCRB prohibited from connecting these databases to other databases, such as the Aadhaar database? Linking various databases will mean that this government can sit in Delhi and practically identify any citizen anywhere. Interlinking databases is a huge violation of citizens' right to privacy, as they allow government to identify citizens even for purposes other than crime detention. And unfortunately, this is the reason why this bill is being brought. Mr. Speaker, sir, just 1 minute. Section 3 of this bill allows government to not only collect finger and footprints, but also physical biological samples, behavioral attributes, and iris and retina scans. This is unbridled power in the hands of government and police. What are the chances that these will not be misused and exploited? What is included in behavioral attributes? Does it include gait and facial recognition? These technologies are very unreliable and heavily biased. It is concerning that the government is not even clearly saying what it wants to do. Similarly, why are biological samples being collected? Is it not a way to bypass DNA bill and bring it through the back door? Preventive detention, suspects and arrestees are not criminals. Just 1 minute, sir. There is a presumption of innocence. On what grounds are you collecting their information? Under section clause 4, are you saying that this data will be expunged if the person is discharged or acquitted? A person in preventive detention is neither charged nor convicted of any crime. So how will their data be removed? We need these answers. Lastly, Muslims, Adivasis and Dalits are predominantly detained and arrested and hardly convicted. This means that your database will have a significantly large number of such people. And before I quit, I would like to, मैं सत्यपाल जी जो जिस महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और वो मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर थे, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप ये बिल लेकर आ रहे हैं तो उसी महाराष्ट्र राज्य की एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला जी, जिसका मैटर अभी कोर्ट के अंदर गया, अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। अगर आपको यही करना है तो ऐसे कानून लाने की जरूरत क्या है? आपकी सरकार तो जो चाहे जिसे चाहे अंदर करने का अगर तय कर ली है तो वो कर रही है, तो ऐसे कानून लाकर हमारे को ये यहाँ पर